Yes, good afternoon, students. So today we will start with a new lesson, that is heat. Okay. So question answers I have sent for the lesson 3 in the group. Remember that. So for lesson 3, question answers are already posted. So just you have to write down the question and answers in your notebook. Understood? Is it clear to all? So all the question answers write properly in your notebook and also read it. Read the lesson because I told you that tomorrow I will be posting the Google form. Okay, I will come and I will take attendance and Google form I will be posting for that. So remember this thing. Is it clear? Understood everyone? Okay. So now we will be starting with the lesson heat. So in this lesson, students, so many concepts are there. It is totally based on physics, and you have to just listen carefully because so many new terms are also there, and uh, we can say that. Examples are also there, good examples are there, which is related to our day-to-day life, etc. like that. So, students, don't miss the class and be regular from today onwards because especially I am talking about this lesson. It is concept-based lesson, so just it will not be enough that you are just reading it and learning it. Okay, so you should be present. Now, first about the heat. What do you know about the heat, students? When I say heat, what does it mean? Can anybody tell me? हीट हीट बोलने के बाद आपके मन में क्या आता है? यस, टेल मी वन बाय वन. Yes, tell me what is the meaning of heat? What does it mean? Okay, it is a form of energy, correct? So heat is a form of energy, isn't it? Everybody should know that. It is a form of energy. Then heat makes you feel hot. Okay, that is a feeling we can say again. Then, yes, again it is a type of energy, Shardul. Okay, form of energy. So everyone is writing the form of energy. Heat is the form of energy. Correct. So this is exactly correct that heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Now, what happens when you see what happens when the summer comes? What happens if the winter comes? Okay, now this is the rainy season going on. But before that, so when we enter the room in the summer, so what is the expression during that? So what we say? Oh God, it is very hot, isn't it? When we enter the room during summer, you say, oh God, it is very hot. Or during winter, if you enter the room, so you say that it is very cold, isn't it? So, okay. So, निर्मय ये बहुत तुमने जो लिखा है ना वो करेक्ट है बट
अगेन इट इज सो लॉन्ग, तो हमें इतना कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आना चाहिए. So here hot or cold. In winter you feel cold. In summer you feel hot. That means your body is in what kind of surrounding, that will be more. means आप कौन से सराउंडिंग में हो, वो सराउंडिंग का असर आप पे पड़ता है, आपके बॉडी पे पड़ता है, आपके बॉडी टेम्परेचर पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, now in winter everywhere it is cold, so you also will feel cold because of the winter. During summer when outside it is hot, so you will also feel hot, isn't it? So the feeling, it is nothing but the feeling of the hot or cold. It is the feeling of hot or cold. Okay. Now, for that, here is one good example. If we take about, and it is filled with, one is having many of with your hand. Hot water is not so much hot that you cannot bear it. At least the hot water is equal to cold water. Now here, when you are just, what you need to understand, it is just the feeling, है ना? जरूरी नहीं है कि हमें लगना ही चाहिए या गैस स्टोव पर ही हम हाथ रखेंगे. हम ऐसे वार्म वाटर में भी हाथ डाल के फील कर सकते हैं कि हाँ, दिस इज हॉट, दिस इज कोल्ड. जब ज्यादा गर्म होता है तो हमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है. We can just feel. ये हमें पता रहता है कि नहीं, ये ज्यादा गर्म है, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, या ये ज्यादा भी ठंडा है, isn't it? So this is just a feeling of hot and cold, isn't it? Hot and cold. So there are so many day-to-day examples. Like here again, we can say that when we come across a number of objects, some of them are hot and some of them are cold. So tea is hot and ice is cold. So in this way, we can list so many objects which are hot and which are cold. तो ऐसे hot और cold example अगर हमें देना है तो बहुत सारे examples दे सकते हैं, isn't it? For example, hot क्या-क्या चीजें hot होती हैं? That tea is hot. Then again, what is hot? Soup is always hot. Then ice cream is always cold. फिर कोल्ड ड्रिंक हमेशा कोल्ड होता है. हाँ, तो इस तरह से ये दो चीजें हैं जो हमेशा हॉट होती हैं. Now we are coming toward the main point also. So here, do not touch the objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. So just now I told you that it doesn't mean that hot है तो हमें गैस स्टोव को ऑन करके उसमें हाथ रखना ही है और देखना ही है. No, we can just feel it कि ये कितना गर्म हो सकता है. हमें पता है, हमें उसकी इंटेंसिटी भी पता है, हाँ, कि अगर हम गैस स्टोव पे हाथ डालेंगे तो जल जाएगा. It is so much cold, sorry, so much hot. So intensity भी हमें पता है. So we see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others, while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other object? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Now, just now I told you, we can compare the things by touching. ये टच करने के बाद हाँ ये गर्म है, हाँ ये ठंडा है, but can we just rely on our sense of touching? क्या हम सिर्फ टच के ऊपर भी देख सकते हैं कि हाँ
ये गर्म है ये ठंडा है, क्या हमें कंपैरेटिवली वो चीज पता हम कर सकते हैं? हाथ लगाने के बाद ही हमें पता चलेगा? क्या हर एक चीज को हाथ लगाना जरूरी है? टेल मी। और क्या हम हाथ लगाने के बाद ही पता कर सकते हैं कि ये गर्म है ये ठंडी है? नो, isn't it? नो, करेक्ट। क्योंकि बहुत बार हमारे हाथ को भी कुछ ये हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस। ज्यादा भी गर्म है तो हम हाथ लगा के कैसे देखेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज को गैस पे रख रहा है, वी कैन नॉट टच इट विदाउट आवर बेयर हैंड्स, जब तक हम ग्लव्स नहीं पहनते हैं। तो कुछ चीज हम हाथ लगा कर पता कर सकते हैं। कप ऑफ टी है तो हम हाथ लगा के बोल सकते हैं कि ओके दिस इज हॉट, ओके दिस इज कोल्ड। बट अगर बहुत गर्म है, जैसे स्टोव पे कुछ रखा है, वी आर नॉट पुटिंग द हैंड लाइक दिस एंड सेइंग दैट यस इट इज हॉट। नो। पानी बॉईल हो रहा है तो हम हाथ डालते हैं क्या अंदर? नो। So we can understand by the boiling itself, by the steam itself, that it is hot. And always not necessary that always we have to put the hand. We cannot always feel by touching only. Is it clear to all? Is it clear? Yes. Like oil, है ना? संतोष is correct. Like oil. जब हम खाना बनाते हैं तो जब ऑयल डालते हैं, हम कभी भी ऐसे उंगली डाल के नहीं देखते हैं, बिकॉज वी नो दैट इट ऑयल जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, वी विल गेट द डैमेज। तो हम जस्ट कुछ उसमें पानी डाल के देखेंगे या जस्ट कुछ राई डाल के देखेंगे, तो फिर पता चलता है इंटेंसिटी या कितना गर्म है हमें पता चल जाता है। So always it is not necessary that we have to touch. We have to feel by touching. Everyone have understood, students? तो टच ही एक मेन हमारा सोर्स नहीं है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये गर्म है या नहीं है। So other methods are also there, isn't it? We know that methods because we are working in kitchen, we are cooking, we know so many methods. दूसरे methods भी होते हैं कि हाँ, अगर oil is kept on the gas, then what we do? We just put a piece of जैसे कुछ है डव का डाल देंगे उसमें, पता चल जाएगा कि हाँ ये गर्म हो गया है, like that. Isn't it, students? So we are not only reliable on the feel of our touch or our hand. Is it clear, everyone? So now, so just one activity, and that already I have told you. I will read it for you. Take 3 large mugs, label them as A, B, C. Put cold water in the mug A, hot water in the mug B, and mix some cold and hot water in mug C. Now, dip your left hand in the mug A and right hand in the B. After keeping the hands in 2 mugs for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. Do both the hands get the same feeling? Now, students, you only give the answer. कि एक इसमें गर्म पानी है, एक इसमें ठंडा पानी है, and here just let me see. A is having hot water, B is having cold water, और C में हमें दोनों हाथ डालने हैं। I have written it medium. Just see this one.
I have written it medium. Now मुझे बताओ, do what is your feeling? Okay, what is my question? Do both the hands get the same feeling? Yes. So some of them are saying no. ये तो है मीडियम, ज्यादा ठंडा भी नहीं है, गर्म नहीं, लेकिन हमने दोनों हाथ यहाँ से निकाल के यहाँ डाले हैं, क्या आपको सेम फीलिंग आने वाली है? नो. यस, जयंत इज आल्सो सेइंग नो, एलाइस इज आल्सो सेइंग नो. यस, कृतिका इज सेइंग हॉट बाय फीलिंग द पेपर. दोनों. तो सब लोगों का ये कहना है कि ये जो फीलिंग है हमें जो मिलेगी दोनों हाथ डालने के बाद वो सेम नहीं रहेगी. नाउ वन बाय वन एक्सप्लेन मी. सबसे पहले ये ए. स्टूडेंट्स कीप योर आंसर्स रेडी. नाउ टेल मी, ए वाला जो हाथ है, ए वाला जो हाथ है जो गर्म पानी में था, जो गर्म पानी में था, उसे क्या फीलिंग आएगा? यस कलापति. अदर्स पोस्ट योर आंसर्स. Okay, so everyone, you are writing he will feel hot. So ये you are hot. If it is you are writing hot, A वाले ने यहाँ हाथ डाल दिया C में और उसे अगर hot लगता है, that means your answer is wrong. Answer is wrong. Students, your answer is wrong. Hot answer is wrong. Yes. So ऋतुजा और ऋषि कलापति ने जो आंसर दिया है कोल्ड, दैट इज करेक्ट. क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा हाथ हॉट पानी में था, तो ये तो कंपैरेटिवली मीडियम है ना, गर्म नहीं है. हमारा ऑलरेडी हाथ कैसे है? गर्म पानी में था, टेम्परेचर इसका गर्म हो गया, और जब हम मीडियम में डालेंगे तो वो हमें तो एकदम ठंडा लगेगा, कंपैरेटिवली ठंडा लगेगा. Isn't it? Understood? गर्म कैसे क्यों लगेगा? इसके कंपैरेटिवली ये पानी तो ठंडा है. ये this water is hot, this water is cold. Understood students? ये जो पानी है वो मीडियम है, बहुत मीडियम है. तो ये हाथ जब इसमें आएगा तो naturally he will feel cold because now the answer is coming here. Now why? What is the reason? Because always remember students, the heat, the hotness, the heat is always passing from the higher region towards the colder region. हीट कैसे ट्रांसफर होती है? कभी भी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ. इसीलिए ये तो ऑलरेडी हॉट है तो ये कोल्ड है, तो हमेशा ये हमें कैसे लगेगा? कोल्ड लगेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी हमारा हाथ यहाँ पर गर्म हो चुका था. तो ये हाथ भी गर्म है, तो गर्म हाथों से भी हीट निकलने की कोशिश करेगी, है ना. यहाँ से हीट निकलने की कोशिश करेगी क्योंकि ये बाहर का जो मीडियम है वो अभी भी ठंडा है हमारे लिए, तो ये हीट यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी. हीट इज ऑलवेज मूविंग. हीट का जो मूवमेंट है
high to low. Everyone write down students, type करो. How is the movement of heat from high to low? Type, type it everyone. What is the movement of the heat always? From high to low. Write down, type it. ये भूलना नहीं है आप लोगों को. Now one by one the concepts are coming. Everyone have understood? The movement of heat is always from high to low. High to low. Everyone understood, students? Type it. Everyone should type high to low. High to low. हाई से लेके लो की तरफ. इसीलिए हमारा ऑलरेडी हाथ गर्म है और जब हम ठंडे पानी में डालेंगे या कंपैरेटिवली कम पानी में डालेंगे तो यहाँ से हीट निकलने की कोशिश करेगी फ्रॉम हाई टू लो और इसीलिए हमें थोड़ा ठंडा महसूस होगा. इसीलिए हमारे हाथ को थोड़ा ठंडा महसूस होगा, ठंडा फीलिंग होगा. हाँ बेटा मैच द फॉलोइंग लिखना ही है. सी आई टोल्ड यू एवरीथिंग यू हैव टू राइट एक्सेप्ट एमसीक्यू. एमसीक्यू लिखना नहीं है, बाकी सब लिखना है. MCQ you have to just stick it in your textbook only. Otherwise, everything you have to write. And I have posted the lesson 3 question answers also. Clear everyone? Okay. So high to low. हाँ, so cold water we will feel hot. तो cold water से जब हमने हाथ को निकाला है, correct? So here also कृतिका, क्योंकि cold water से हमने निकाला है ना हाथ को और थोड़ा सा मीडियम पानी में डाल रहे हैं, तो अभी हमें क्या लगेगा? ज्यादा गर्म लगेगा वो, isn't it? Is it clear? Understood now, students? Because comparatively अभी यहाँ पर क्या है? ये तो सराउंडिंग ज्यादा हॉट है, तो हॉट से ये आने की कोशिश करेगा और हमें ये गर्म लगेगा, ज्यादा गर्म लगेगा. So yes, Jayant, what is your question? So ma'am, cold transfers to low to high. Not about cold, Jayant. Once again, students, you are misunderstanding. Cold यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सब hot है. We are studying about the heat. Nothing is cold. Cold means. Now you remember that we are discussing only about the heat. Cold नहीं. और cold क्यों लग रहा है हमें? क्योंकि hot नहीं है. Now did you understand, Jayan? हमें cold क्यों लग रहा है? क्योंकि ये hot नहीं है, इसीलिए हमें cold लग रहा है. Cold जैसी कोई चीज नहीं होती है. आपने टेम्परेचर देखा होगा कभी भी? टेम्परेचर हॉट या कोल्ड नहीं होता है, टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टेम्परेचर ही है. रिमेंबर दैट. अभी तक मैंने कोल्ड ऐसे कोई चीज बताई नहीं है तुम लोगों को. कोल्ड नहीं होती है, हॉट या कम या ज्यादा. हॉट जो है वो कम या ज्यादा होता है, हॉट और कोल्ड नहीं. कोल्ड मींस
It is not the actually the heat that we are measuring. समझ में आ रहा है? तो ये जो है हीट ही है, ज्यादा है हीट तो हम बोलेंगे हॉट, और हीट अगर कम है तो हम बोलेंगे कि कोल्ड. नाउ यू अंडरस्टूड? आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ये हीट का मेजरमेंट है. दैट इज व्हाई इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू व्हाट इज हीट. Heat is the measurement of hotness or coldness. Heat को ध्यान में रखो. तो हम कोल्ड नहीं, कोल्ड ऐसी कोई चीज नहीं होती है. कोई ज्यादा गर्म है, कोई कम गर्म है. इसीलिए जब आप टेम्परेचर गिनते हैं you might have seen that हाँ, तो आपने देखा होगा जब हम टेम्परेचर गिनते हैं तो समटाइम्स डॉक्टर सेज दैट योर टेम्परेचर इज मोर, योर टेम्परेचर इज लेस. टेम्परेचर या तो ज्यादा होता है या कम होता है. वैसे ही हॉटनेस ज्यादा होता है या कम होता है. जब हॉटनेस कम होता है देन इट इज कॉल्ड एज कोल्ड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू यू? इसीलिए ये भी ध्यान में रखो, heat always moves from high towards the low. क्लियर? तो हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं. अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है दैट इज बिल्कुल करेक्ट. ओके, समझ में आ गया? तो कोल्ड ऐसी कोई चीज नहीं है. नाउ दैट इज द डिग्री ऑफ मेजरिंग द हीट. ओके, so yes, you can try the activity at home. So now here you can see that. So students, just you can see that बुझो का जवाब भी क्या है, तो आपको और थोड़ा सा यहाँ पर मिल जाएगा आंसर. बुझो says myself hand. My left hand tells me that the water in the mug is hot and the right hand tells me that the same water is cold. अभी देखो, the water is medium only. Water तो change नहीं हुआ है. Water is the same. Water is the same. But this hand feels that it is hot and this hand feels that it is cold. Isn't it, students? So that means it is just the feeling of hotness. ये दोनों हाथ जब हमने इधर डाला तो ये हाथ को लग रहा है ये ठंडा है, इस हाथ को लग रहा है कि ये गर्म है. That means water is the same. Water change नहीं हुआ है. Water is medium only. But हमारे जो दो हाथ थे वो अलग अलग एनवायरमेंट में थे, अलग अलग सिचुएशन में थे, and now it is the same. ये हाथ को ये हमेशा ही ठंडा लगेगा, ये हाथ को हमेशा गर्म लगेगा. Is it clear? So कल मैं टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी आप लोगों को. ओके स्टूडेंट्स? So now you can give the attendance. तो पूरा टेम्परेचर वाला जो पार्ट है मैं कल लूंगी तुम लोगों का, या फिर माय गूगल फॉर्म इज आल्सो रेडी. टुमारो आई मे पोस्ट द गूगल फॉर्म. इसीलिए मैंने कहा है कि क्वेश्चन आंसर्स अपने रेडी रखो, क्वेश्चन आंसर्स रेडी रखो और रीड भी कर लो, सो दैट दिस वन दैट इज योर क्वेश्चन आंसर्स यू रीड इट, सो दैट गूगल फॉर्म यू कैन फिल इट. ओके, तो टेम्परेचर वाला पार्ट जो है हम कल देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so is it clear to all? This activity you do at home students. तो आपको ये पता चल जाएगा कि रियल में जो हॉट वाटर है उसका वाला हाथ आपको ठंडा लगेगा, जो कोल्ड वाले वाटर में जो हाथ है उसका वाला हाथ आपको गर्म लगेगा. सो स्टूडेंट्स,
कल आप इसको एक्टिविटी को करोगे और मुझे बताओगे आपका एक्सपीरियंस. एवरीवन अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? You want to send the pics? Then you can send it. Okay, students. So thank you so much.